Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed about angle between two vectors and direction angles and direction cosines of a vector. So how to find the angle between two vectors? We have calculated that is cos theta. The cosine of angle between two vectors is equal to the ratio of their dot product, that is v1 dot v2 divided by product of their magnitudes, that is magnitude of vector v1 into magnitude of vector v2, both in case when general vectors are given and when the vectors are represented in terms of their rectangular components. So if the general vectors are given, then the angle between them, then the cosine of angle between them is given by cos theta is equal to v1 dot v2 divided by magnitude of v1 into magnitude of v2. And when vectors are represented in terms of their rectangular components, then theta, the angle between them, is given by cos inverse of a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, that is sum of products of their scalar components, and divided by square root of non-negative square root of a1 square plus a2 square plus a3 square, that is non-negative square root of sum of squares of the scalar components of first vector and non-negative square root of sum of squares of scalar components of the second vector. And that we have discussed in the previous class. And in the previous class we have discussed also direction angles and direction cosines of a vector. सो जिगरा अगर आपके पास एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है, सपोज दिस इज आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज आवर पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर पॉजिटिव जेड एक्सिस. सपोज I cap is a unit vector along the positive direction of x axis, j cap is a unit vector along the positive direction of y axis, and k cap is a unit vector along the positive direction of z axis. And suppose we have a vector which is under consideration, which is denoted by vector v as a1i plus a2j plus a3k, represented in terms of its components. Suppose this vector v is inclined at an angle of alpha with x-axis, and it is inclined at an angle of beta with y-axis, and it is inclined at an angle of gamma with this z-axis. So alpha is an angle which the vector v makes with positive x-axis, beta is an angle which the vector v makes with the positive y-axis, and gamma is an angle which the vector v makes with the positive z-axis. Then this alpha, beta and gamma, they are known as the direction angles of this vector v, and the ordered three tuple of cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosines of this vector. So आपको alpha beta gamma लेना है, that is the angles which a vector v makes with the positive directions of x axis, y axis and z axis respectively. And to every angle you have to operate cosine and take the ordered three tuple of cos alpha, cos beta and cos gamma. ये जो बनेगा ordered three tuple cos alpha, cos beta, cos gamma, यही कहलाएंगे इस वेक्टर v के डायरेक्शन cosines. ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा है. तो जिगरा फिर हमने कैलकुलेट किया ये cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ये किसके बराबर आएंगे. सो ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ cos अल्फा आया था एक्चुअली a1 डिवाइडेड बाय मॉड v, cos बीटा आया था यस a2 डिवाइडेड बाय मॉड v, और cos गामा आया था यस a3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर v. So a1, the first scalar component, divided by modulus of the vector. The a2, the second scalar component, divided by magnitude of the vector, and a3, the third scalar component of the vector, divided by magnitude of the vector. तो पहला scalar component divided by magnitude will give you the first direction cosine. Second scalar component divided by the magnitude will give you the second direction cosine, and third the scalar component divided by magnitude of the vector will give you the third direction cosine of the vector, and that direction cosines we have calculated in the previous class. Now in that topic, direction angles and direction cosines of a vector, there lies some important observations. So here lies the observations regarding direction angles and direction cosines of a vector. Here lies the first observation, and that is, since cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosines of a vector, we will calculate cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. That is sum of squares of direction cosines of a vector.
Cos alpha, cos beta, and cos gamma are direction cosines of a vector v. Here, proper vector v. Now we will calculate their squares, and after that we will find their sum. That is, actually we are going to calculate the sum of squares of direction cosines of a vector. किसके बराबर आएंगे? So that's equal to cos square alpha. Cos alpha का वैल्यू है a1 by mod v, तो a1 divided by mod v का स्क्वायर प्लस cos beta square or cos square beta. So that will come out to be a2 divided by mod v का whole square plus cos square gamma or cos gamma का whole square. Put the value of cos gamma. What is that? a3 divided by mod v का square. This will come out to be, yes जिगरा, न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर दे दो, डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर दे दो, तो क्या आएगा? a1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड v स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड v स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड v स्क्वायर. And that will come out to be, yes jigra, since mod v square is the common denominator, we will keep it common. So ऊपर क्या बनेगा? a1 square plus a2 square plus a3 square. So it is a1 square plus a2 square plus a3 square divided by mod v का whole square, the common denominator. And that's further equal to, yes jigar, instead of a1 square plus a2 square plus a3 square, can we write, क्या लिख सकते हैं? Square root of a1 square plus a2 square प्लस a3 स्क्वायर का होल स्क्वायर. स्क्वायर भी कर दिया, स्क्वायर रूट भी कर दिया, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल काउंटर बैलेंस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसल आउट. देयर विल रिमेन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड v होल स्क्वायर. एंड दैट विल कम आउट टू बी, ऐसा क्यों कर दिया? देखो जिगरा, अगर इस चीज को देखेंगे विच इज विद इन द ब्रेसेस, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. But what are actually a1, a2 and a3? a1, a2 and a3, they are actually the scalar components of the vector v. So the non-negative square root of sum of squares of scalar components, non-negative square root of sum of squares of the scalar components gives us the modulus of the vector, magnitude of the vector. So this is magnitude of vector v, लेकिन इसका स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v का स्क्वायर. न्यूमरेटर में भी वही टर्म, डिनोमिनेटर में भी वही टर्म, कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा जिगरा? 1. The beautiful result, that is what we have taken actually implies, so cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, and that will come out to be 1. तो ये आया किसके बराबर? 1 के बराबर. That is the sum of squares of direction cosines of a vector is always equal to 1. Sometimes we denote these direction cosines. The first direction cosine we denote that by L, the second direction cosine we denote that by M, and the third direction cosine we denote that by N. इसकी बात करेंगे हम आगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में. लेकिन जिगरा, फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन को हम L से भी डिनोट करते हैं, cos बीटा को हम M से भी डिनोट करते हैं और cos गामा को हम N से भी डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे हम cos अल्फा के बदले L लिख सकते हैं, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 1. और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर plus n square must be equal to 1. The most important result, that is the sum of, इसका क्या मतलब है? That is the sum of squares of direction cosines of a vector. The sum of squares of direction cosines of a vector is always equal to 1. The direction cosines of a vector, the sum of squares of direction cosines of a vector is always equal to 1. याद रखना जिगरा, the sum of squares of direction cosines of a vector is always equal to 1. That was the first observation regarding direction angles and direction cosines of a vector. Now similarly, we will discuss from this observation, we will discuss the second observation.
In the first observation, we have taken cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. Now in the second observation, we will take sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. पहली ऑब्जर्वेशन में हमने जिगरा कैलकुलेट किया था cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. Now in the second observation, we are going to calculate sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. ये देखेंगे किसके बराबर आ रहा है. तो that is further equal to, yes, instead of sin square alpha we can write 1 minus cos square alpha, because sin square alpha plus cos square alpha is always equal to 1, and sin square alpha must be equal to 1 minus cos square alpha, plus instead of sin square beta we can write 1 minus cos square beta, plus instead of sin square gamma we can write 1 minus cos square gamma, and that's further equal to plus 1 plus 1 plus 1, that is plus 3. ठीक है जगह, माइनस cos square alpha माइनस cos square beta माइनस cos square gamma, तीनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन लेके आएंगे. जब इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है तो बचेगा cos square alpha प्लस, यहां पे माइनस कॉमन आ रहा है तो प्लस cos square beta, माइनस कॉमन आ रहा है तो बचेगा प्लस cos square gamma. So within the braces we have cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, and that's equal to 3 minus cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. Cos alpha, cos beta, cos gamma, they are the direction cosinus. So it is sum of squares of direction cosinus of a vector. अभी हमने कैलकुलेट किया किसके बराबर आ रहा है 1. So 3 minus 1, and that will come out to be 2. Again, very nice result. That is implies sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma, and that must be equal to 2. So cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1 के बराबर आ रहा है, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma 2 के बराबर आ रहा है. So remember these two results, they are very much important. The sum of squares of direction cosinus of a vector is always equal to 1, and sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. This observation we have derived it from the first observation. Now lies the third observation, again very much important, because we are going to very important observation. This one is because we are going to use this observation very often in the exercises. So here lies the observation 3, and in that observation 3 we are actually going to, we have a proper vector v, and along that proper vector v we are going to find a unit vector. So the observation 3 must be in such a way that we are going to calculate a unit vector along the direction of vector v, and we know that a unit vector along the direction of any vector must be equal to 1 divided by magnitude of the vector into the vector. पढ़ा है जिग्रा हमने, अगर v हमारे पास कोई प्रॉपर वेक्टर है तो इस v के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे v कैप से, किसके बराबर आएगा ये 1 divided by magnitude of vector v into vector v. Because vector v में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड विल काउंटर बैलेंस, विल कैंसल आउट. वहां पे बचेगा 1 और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन, तो क्या आएगा यूनिट वेक्टर. So here in the observation third we are actually going to calculate the unit vector along the direction of vector v. The unit vector along the direction of vector v is given by शाबाश जिगरा, डिनोट कैसे होगा v कैप से, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इनटू वेक्टर v. 1 divided by magnitude of vector v into vector v, and that's equal to 1 divided by magnitude of vector v into vector v. वेक्टर v का अपना वैल्यू यहां पे पुट कर दो, क्या है a1i, so a1i plus a2j plus a3k. Now 1 divided by magnitude of a vector must be a scalar quantity.
1 डिवाइड बाय स्केलर इज अगेन अ स्केलर, तो इस स्केलर से इस वेक्टर को मल्टीपल कर दो तो हर किसी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को इस स्केलर से मल्टीपल होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा जीरा, दैट मस्ट बी इक्वल टू यस 1 divided by magnitude of vector v into a1. So a1 ones are a1 divided by magnitude of v I. So a1 divided by magnitude of vector v I plus yes a2 divided by magnitude of vector v j. So a2 divided by magnitude of vector v into j cap plus yes a3 ones are a3 divided by magnitude of vector v into k cap. तो जीरा हमें मिला v cap unit vector along the direction of proper vector v is a1 by magnitude of v into I plus a2 divided by magnitude of vector v into j plus a3 divided by magnitude of vector v into k. The most important result, the unit vector along the direction of proper vector v is a1 by mod v I, a2 by mod v j, a3 by mod v k. But look at this a1 by mod v, a2 by mod v, a3 by mod v, a1 by mod v, a2 by mod v, a3 by mod v. What are they? They are actually the direction cosines. So the direction cosines of a vector, the direction cosines of a vector are nothing but they are the scalar components of its unit vector, because we have calculated v cap. V cap is a unit vector along the direction of vector v. So if v cap is a unit vector along the direction of vector v, its scalar components are a1 by mod v, a2 by mod v, a3 by mod v, but they are actually the direction cosines of a vector. So the direction cosines of a vector are nothing but the scalar components of its unit vector. तो जिगरा अगर आपके पास कोई वेक्टर होगा v which is equal to suppose 2i plus 3j plus 4k, suppose you have a proper vector v resolved in space in terms of its rectangular components as 2i plus 3j plus 4k and you need to find its direction cosines. अगर आपको चाहिए इसके डायरेक्शन कोसाइनस, तो इसके डायरेक्शन कोसाइनस के लिए आपको इसके डायरेक्शन एंगल्स की जरूरत नहीं है। यानी आप कहोगे कि आप पहले अल्फा निकालेंगे, फिर बीटा निकालेंगे, फिर गामा निकालेंगे, एंगल्स which the vector v makes with the positive directions of x axis, y axis and z axis respectively. फिर उन एंगल्स को ऑपरेट करेंगे cos alpha, cos beta and cos gamma and there you will get the direction cosines. No, नहीं जिगरा ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, आपको इस वेक्टर v के अलोंग निकालना है यूनिट वेक्टर 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इनटू द वेक्टर v। तो जो उस यूनिट वेक्टर के आएंगे 3 स्केलर कंपोनेंट्स, जो यूनिट वेक्टर के आएंगे 3 स्केलर कंपोनेंट्स, वही 3 स्केलर कंपोनेंट इस प्रॉपर वेक्टर v के होंगे डायरेक्शन कोसाइन्स। सो याद रखना, वेरी मच इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिस इज, दैट इज द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए वेक्टर आर नथिंग बट द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ इट इज यूनिट वेक्टर। तो यहां पे मेंशन करेंगे दैट इज द डायरेक्शन कोसाइन्स, that is the direction cosinus of a vector v are nothing, that is the direction cosinus of a vector v are nothing but, अब यहां पे लिखेंगे ऊपर but the scalar components, but the scalar components of it is unit vector. The direction cosinus of a vector are nothing but the scalar components of it is unit vector. So in order to find the direction cosinus of a vector, you need not to find the direction angles. You have to directly calculate the unit vector along the direction of that vector, and the direction and the scalar components of that unit vector must be the direction cosinus of the proper vector v. तो जिगरा एक वेक्टर के चाहिए डायरेक्शन कोसाइनस, क्या होंगे, आपको उस वेक्टर के अलोंग निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर के ऑब्वियसली बनेंगे स्केलर कंपोनेंट्स, तो उन्हीं स्केलर कंपोनेंट्स का ऑर्डर्ड 3 टपल ले लो, वही ऑर्डर्ड 3 टपल विल गिव यू द डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ द गिवन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ द प्रॉपर वेक्टर। These were the observations regarding direction angles and direction cosinus of a vector. All the 3 observations are very much important. First one was
cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is always equal to 1. Sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is always equal to 2. And the direction cosines of a vector are nothing but the scalar components of its unit vector. So that was all about the topic direction angles and direction cosines of a vector. Now we are on the concept, and that's called the projection of a vector on a directed line. एक वेक्टर की प्रोजेक्शन हम कैसे निकालेंगे, एक वेक्टर की इमेज कैसे हम निकालेंगे ऑन अ डायरेक्टेड लाइन ऑन अनदर वेक्टर. तो सपोज आपके पास कोई डायरेक्टेड लाइन है, सपोज लाइक दिस, एंड आपके पास एक वेक्टर है which is represented by vector v. It must be represented by some directed line segment, means it must have some initial point, and let its initial point be denoted by capital A, and its final point be denoted, its terminal point be denoted by capital letter B. So you have to actually find the projection of this vector AB on the directed line L. You have a directed line L, a line L which has this particular direction, and you have a vector V represented by the directed line segment AB. Its initial point is A and its final point is B. Now the topic is actually you have to locate the projection. You have to find the projection of this vector V on the line L or along the line L. इस वेक्टर AB की, इस वेक्टर V की प्रोजेक्शन क्या रहेगी ऑन लाइन L, on the directed line L. इस वेक्टर AB, इस वेक्टर V की क्या इमेज रहेगी ऑन लाइन L, ये डिस्कस करना है. तो what is actually the definition of projection? Here lies that the projection of vector V along the directed line L, the projection of vector V along the directed line L is given by V dot P, suppose P, divided by magnitude of vector P. अभी P कहां से आ गया? चलो V हमारे पास मेंशनड है, लेकिन ये P कहां से आ गया? Where P is a vector along the directed line L. Suppose आपके पास एक वेक्टर P है, लेकिन वेक्टर P है on the line L or along the line L. Where vector P is a vector along the line L. तो जिगरा आपको चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर V along the line L. तो कैसे मिलेगा? सपोज along the line L आपके पास एक और वेक्टर है which is suppose denoted by vector P. सो आपने क्या करना है, इस वेक्टर V की प्रोजेक्शन क्या रहेगी ऑन डायरेक्टेड लाइन L, और इस वेक्टर V की प्रोजेक्शन क्या रहेगी ऑन दिस वेक्टर P. सो यू हैव टू एक्चुअली फाइंड V डॉट P. You have to find the dot product of vector V and P and divide that dot product by the magnitude of vector P, that is magnitude of this thing, magnitude of that vector on which you have to find the projection. ठीक है? It is generally denoted by इस प्रोजेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? PROJ, projection of vector V on the line L. It is denoted by projection of vector V on the directed line L. So the projection of vector V on the line L or the projection of vector V along the line L कैसे निकालेंगे? सपोज उस लाइन L के along हमारे पास एक और वेक्टर है which is denoted by vector P. तो आपने क्या करना है, इस वेक्टर V को डायरेक्टली डॉट करना है इस वेक्टर P के साथ और डिवाइड करना है इस वेक्टर P का मैग्नीट्यूड, दैट इज उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिस पे आपको चाहिए प्रोजेक्शन, जिसकी प्रोजेक्शन नहीं बल्कि जिस पे चाहिए प्रोजेक्शन, तो उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने डिवाइड करना है और वही मिलेगा आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर V along the line L. So also this projection can also be written as projection of vector V along the directed line is equal to what? V dot P, V vector dot P vector divided by magnitude of P vector.
and that must be equal to. In the numerator, we have actually dot product of v and p, and in the denominator, we have actually the magnitude of vector p. So p divided by magnitude of p means vector divided by its magnitude. जब एक वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं, क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर, ऑब्वियसली. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v डॉट p divided by magnitude will give you p cap. So vector v divided by vector v dot product with p cap means ये प्रोजेक्शन आप एक और तरीके से निकाल सकते हो. अगर आपको चाहिए वेक्टर v की प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर p, तो सिंपली इस वेक्टर p के अलोंग निकाल दो यूनिट वेक्टर, फिर उस यूनिट वेक्टर का डॉट कर दो इस वेक्टर v के साथ. जो रिजल्ट आएगा दैट मस्ट बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v ऑन द वेक्टर p. सो projection of vector v on line L is v dot p divided by magnitude of p. P divided by magnitude will give you the unit vector along the direction p, and that must be denoted by what? P cap. So v dot p cap, where p cap क्या होगा? Where p cap is a unit vector. p cap होगा जिगरा एक unit vector along the directed line. p cap होगा एक यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्टेड लाइन, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन के अलोंग ही है हमारे पास वेक्टर p, और वेक्टर p के अलोंग ही होगा p cap यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p. सो मींस इन जनरल और इन पर्टिकुलर वी कैन से दैट अगर आपको चाहिए वेक्टर v1 की प्रोजेक्शन वेक्टर v2 पे, सपोज you need to find, you have two vectors v1 and v2, and you need to find the projection of vector v1 on vector v2. किसके बराबर आएगा? v1 का डॉट कर दो v2 के साथ, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दो उस वेक्टर का जिस पे चाहिए प्रोजेक्शन. तो वेक्टर v1 की चाहिए किस पे? वेक्टर v2 पे. तो किसके बराबर आएगा? v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर. सो इन पर्टिकुलर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ, इन पर्टिकुलर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v1 ऑन वेक्टर v2. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v1 ऑन वेक्टर v2 must be equal to their dot product, that is v1 dot v2 divided by मैग्नीट्यूड ऑफ नॉट v1 बट v2, क्योंकि प्रोजेक्शन चाहिए v2 पे. सो v1 डॉट v2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v2. सिमिलरली वी कैन लोकेट प्रोजेक्शन ऑफ, अगर आपको चाहिए अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v2 की प्रोजेक्शन चाहिए किस पे? v1 पे. तो किसके बराबर आएगा? v2 डॉट v1. सो दैट मस्ट बी इक्वल टू v2 डॉट v1 divided by magnitude of v1. So magnitude of v1, that must be equal to, since v2 dot v1, that is the dot product of two vectors, and the dot product of two vectors is always commutative. So instead of v2 dot v1, we can write v1 dot v2 divided by magnitude of v1. तो जिगरा ये भी v1 डॉट v2 है, ये भी v1 डॉट v2 है. फर्क क्या है? यहां पे डिवाइड है मैग्नीट्यूड ऑफ v2, यहां पे डिवाइड है मैग्नीट्यूड ऑफ v1. सो इट इज एक्चुअली द डिनोमिनेटर हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v1, विच विल डिसाइड कि ये प्रोजेक्शन कौन से वेक्टर की किस वेक्टर पे है. सो अगर डिनोमिनेटर में v2 है तो ये होगी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v1 ऑन v2. अगर डिनोमिनेटर में v1 है तो ये होगी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v2 ऑन वेक्टर v. So that was all about the simple definition, that is projection of a vector on a directed line or projection of a vector on a vector. So ये था जिगरा topic. These were the two topics. One was observations regarding direction angles and direction cosines of a vector, and next one was projection of a vector on the directed line. Now I think this is the building material for the remaining questions of that exercise 10.2, and in the next exercise we are going to discuss that questions. In the next class we are going to discuss that questions of this exercise 10.2, and that's all about the class.